Hello and welcome to today's video with a very sensitive topic. वो टॉपिक है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में आ सकता है या कंपनी स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या आ सकता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन टूडेज वीडियो। Firstly, let me tell you, I'm really concerned about what is happening in Bangladesh. The relationship with India obviously remains a concern from the series of news flows. आप सभी को मालूम है, तो थोड़ा फोकस वहीं पे रहेगा, लाइक व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है इंडियन इकोनॉमी में या ओवरऑल मार्केट। दिस इज पॉइंट नंबर वन। एंड सेकेंड पॉइंट इज बांग्लादेश में जो चल रहा है दैट इज ऑब्वियसली अटैक ऑन माइनॉरिटीज हिंदूज, which is a very disheartening incidents or disheartening thing happening over there. Although that is not our point of discussion in today's video, but I specifically thought of raising some voice. Things are cooling off, but there are still random information coming from various videos and various news channels. So it remains a concern, and obviously I strongly condemn what is happening in Bangladesh. Bangladesh has witnessed riot. Bangladesh has witnessed dislocation of Hindus earlier in way back in 1948. Today, what is happening that is not very different from what happened at that point in time. Then Hindus were majority over there. I'm not sure whether that there was majority, but yes, numbers were much higher than what number of Hindus are there today. But then also what happened, like people had to leave the country, genocide, attacks, genocide, and Indian, like Bangladeshi Hindus were dismantled, uprooted, or they lost everything. Today, what is happening that is not very different from what happened in 1948. It can be as big as 1948 issue. So this radical thought process, radical Islamist thought process is not acceptable, or I would say this is dangerous for the community. So although like that is not our point of discussion in today's video, but I thought of raising voice, and I thought of like convey it to all of you guys. I know that you all are aware of it, what is happening, and you all are concerned about it, and you must be. तो चलिए अपने टॉपिक में जाते हैं, एक है कि क्या इम्पैक्ट आएगा, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कंपनी स्पेसिफिक इम्पैक्ट, जो कौन सा कंपनी का बांग्लादेश में अच्छा खासा एक्सपोजर है, ज्यादा एक्सपोजर है, एंड कौन सा कंपनी का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर इन दिस वीडियो। तो एंड तक प्लीज देखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एज आई सेड, फर्स्ट पार्ट इज what is going on in Bangladesh. That is something we need to understand. तो एक है कि there was like before happening these entire incidences, last almost 8-10 months I have been constantly watching what is happening in Bangladesh. There was some anti-India sentiment growing. There was some anti-India sentiment growing, which is very, very evident. Like I got lots of videos, although I cannot like spend much time after these videos, but yes, I have like heard a little bit. Like those are really concerned, which I don't know how
means anti-India sentiment was growing up in Bangladesh. तो ये चलते हुए over the period of time वो rap जो है that was accumulating and very unfortunate that वहाँ पे जो समझ में आता है मतलब लोगों का जो mindset मेरे समझ में आता है at least people who speaks mindset वही है they replicate Hinduism with India and that is why all rap is all around. तो इंडिया के अगेंस्ट में जो एंटी इंडिया कैंपेन बिलीव मी आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मैनेजमेंट ऑफ कपल ऑफ कंपनी कि क्या आपका बांग्लादेश का क्या इम्पैक्ट आपके समझ में आता है कंसीडरिंग स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट. एक तो हम वर्धमान टेक्सटाइल के मैनेजमेंट से पूछा था एटलीस्ट लाइक in December quarter, what I feel after December quarter result, I asked management of Bangladesh कि क्या आपको लगता है कि it can impact your business or overall yarn export, क्योंकि इंडिया से yarn export होता है, बांग्लादेश is the major destination of yarn. तो तब तो उतना प्रोमिनेंस में नहीं आया था. पीपल सेड सॉरी मैनेजमेंट सेड नहीं ठीक है थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है बट दैट इज नॉट दैट बिग एंड दैट इज नॉट इम्पैक्टिंग मगर थिंग्स वेर ग्रोइंग एट डिफरेंट levels and finally it converted into or let's say it accumulated and Sheikh Hasina's some decision became the trigger for the entire incidents and it happened. तो अब प्रॉब्लम है कि ये जानना क्यों जरूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा. देखिए इंडियन इकोनॉमी में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है. इंडिया इज एन एक्सपोर्टर टू बांग्लादेश. इंडिया का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में जाता है. तो कितना एक्सपोर्ट बांग्लादेश में जाता है अगर बोलते हैं तो दैट इज आई हैव द नंबर आई कंप्यूटेड दिस नंबर आई फाउंड इन 20 FY 23 it was 0.7%. In FY 24 it came down to 0.5% of total export. टोटल इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 0.5% ही FY 24 में बांग्लादेश में गया था. तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है मगर मतलब सिग्निफिकेंट ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट. आप अगर बिजनेस बंद कर दे तो इंडिया के साथ टोटल बिजनेस बंद कर दे तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मगर when it comes about Bangladesh imported around 15% in 9 months of I would say 14% exactly in 9 months of FY 24. तो दैट इज सिग्निफिकेंट. आप अगर पकड़ लेते हो कि वो 20% के आसपास का इंपोर्ट है, इंपोर्ट करते हो आप इंडिया से एंड इफ यू stop importing from India then you will face the problem. We do not have any problem. तो इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट स्ट्रेट समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं. अगर इम्पैक्ट कहाँ पे है, इम्पैक्ट है कुछ स्पेसिफिक कंपनीज पे. कौन सा कंपनी? मान लीजिए मैरिको बहुत सारा कंपनीज है जिसका बांग्लादेश में एक्सपोजर है. बहुत सारे इंडियन कंपनीज है जिसका बांग्लादेश में एक्सपोजर है. तो इमीडिएट टर्म में जो समझ में आता है सबसे पहले दिमाग में आता है एफएमसीजी कंपनीज का. एफएमसीजी कंपनीज बांग्लादेश में काफी सारा प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट कैन रियली इम्पैक्ट देयर सेल्स. तो अगर मैरिको का बात करते हैं तो Q4 FY 25 में सॉरी Q4 FY 24 में मतलब लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो 12% के आसपास का रेवेन्यू बांग्लादेश से जनरेट किया था मैरिको. तो 12% इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर मैरिको. तो दैट ऑब्वियसली रिमेन्स अ कंसर्न इस टाइप के कंपनी. वैसा बहुत सारा टेक्सटाइल कंपनीज जैसे हम बोला कि यर्न इज सोल्ड टू बांग्लादेश. यर्न इज एक मेजर डेस्टिनेशन है यर्न का बांग्लादेश इज एन इंपोर्टर ऑफ यर्न और उसके बाद दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गारमेंट्स. जो फाइनल गारमेंट्स है फैब्रिक है गारमेंट्स है दैट इज समथिंग दे प्रोड्यूस इन बांग्लादेश एंड दे सेल इट टू यूरोपियन एंड यूएस यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस. ठीक है. तो
अब स्पेसिफिक कंपनीज का बात करते हैं जो लिस्टेड प्लेयर्स है, उन लोगों को ज्यादा कुछ इम्पैक्ट मेरे समझ में नहीं आते, इन द सेंस जैसे वर्धमान पकड़ लीजिए, वर्धमान का एक्सपोर्ट ऑब्वियसली है, यार्न का एक मेजर एक्सपोर्ट होता है, और ओवरऑल एक्सपोर्ट का भी मेरे हिसाब से 30% के आसपास, थोड़ा देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट है वर्धमान का, अगर 30% के आसपास का है तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मगर क्या है कि दिस एक्सपोर्ट इज नॉट वेरी मच एक्सपोज टू बांग्लादेश, थोड़ा बहुत ही जाता होगा, मगर वर्धमान इज मच डिपेंडेंट ऑन यू नो यूरोप एंड यूएस, स्पेशली यूरोप फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, और जो वर्धमान का एक्सपोर्ट जाता है दोज आर टारगेटेड टू स्पेसिफिक कंपनीज जिसके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है यूरोप में, तो उन लोगों को सेल करता है वर्धमान। तो इन दैट सेंस बांग्लादेश फिगर, बांग्लादेश इशू मस्ट नॉट हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन वर्धमान। अब स्पेसिफिकली बांग्लादेश में कितना जाता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, दैट डिस्क्लोजर इज नॉट देयर फ्रॉम द मैनेजमेंट। स्पेसिफिक कंट्री वाइज वैसे कंपनी बोलता नहीं है, और हम लोग भी कभी पूछा नहीं है। तो अभी सडनली इट बिकम्स कंसर्न, तो हो सकता है इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई मे आस्क दिस क्वेश्चन गोइंग फॉरवर्ड। Q1 का मैनेजमेंट कॉल हो चुका है, सो दैट स्कोप इज नॉट देयर। अच्छा, तो अभी वेरी इंपॉर्टेंट इज वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज का एज पर माई नॉलेज गोज करीब 8 प्लांट्स आर देयर इन बांग्लादेश, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। 35-40% का ऑपरेशन सुना है कि बांग्लादेश से आता है इसका, मगर रेवेन्यू, एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न, एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज कंसर्न, दैट इज नॉट मोर देन 4%। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इट इज नॉट ओनली बांग्लादेश, दे सेल इट एवरीवेयर, मीन्स इन मिडिल ईस्ट and in some other countries, part of Africa probably. So that is not going to be very significant for Bangladesh. मगर problem कहाँ हो सकता है? And that is why I had a call. I managed, like I got an opportunity to speak to the management of VIP Industries just couple of days back. So क्या नाम है उसका management? I have spoken to the lady Neetu. So what she answered. So I asked this question ke what is the current scenario, number one. Number two, what is the employee mix of Bangladeshi employee and Indian employee in their Bangladesh plant? So let me tell you क्या management बोला कि एक है कि yes, there are unrest obviously. Couple of days back I had spoken to her, and during the management call she told me that 40 days of unrest they had only shut down for 3 days. The rest of the days attendance everything was absolutely intact. और क्यों ये possible है? क्योंकि their plant is located in export oriented zone, तो उसके लिए उसका ऑपरेशन एकदम इंटैक्ट था, कहीं पे कुछ इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, जो एम्प्लॉइज अगर आप बात करते हैं तो देर आर 3800 एम्प्लॉइज इन देयर बांग्लादेश प्लांट, आउट ऑफ ओनली 20 आर इंडियन, रेस्ट आर ऑल बांग्लादेशी लोकल पीपल। और अब एक अच्छी बात है कि somehow management sensed something wrong which may happen, and just ये पूरा हादसा होने से एक दिन पहले, ये जो 40 डेज का अनरेस्ट, उसके ठीक एक दिन पहले दे सेंड बैक ऑल ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज टू इंडिया। सो दैट इज द गुड थिंग दे डिड, एंड इसके लिए कोई प्रॉब्लम वहां पे हुआ नहीं। अब मेरा सवाल है कि व्हाट इज द आउटलुक, क्या लगता है आपको, क्या चलेगा, लाइक कंसिडरिंग द एंटी इंडिया सेंटिमेंट, गिवन एंटी इंडिया सेंटिमेंट, स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट, क्या रहेगा आगे चल के? विल इट बी अ big problem going forward? What will happen, means in case if you face some issue, what would be the strategy to mitigate that scenario? क्योंकि आपका एक मेजर ऑपरेशन वहां पे है। तो जो मैनेजमेंट मुझे बोला, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैनेजमेंट बोला वेरी क्वाइट नेचुरल के बोला कि देखिए आगे चल के क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू नॉर्मलाइज, बट दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट। तो आज के डेट में बताना पॉसिबल नहीं है। दे आर कीपिंग अ क्लोज आई, एंड अकॉर्डिंगली दे विल टेक डिसीजंस एंड लाइक स्ट्रेटजीज
accordingly. तो ठीक है, quite natural, quite means logical. तो that was from VIP industries. अब बाकी बहुत सारा कंपनीज का एक्सपोजर है एफएमसीजी में, बाकी कुछ कंपनीज का भी एक्सपोजर है वहाँ पे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट्स, बांग्लादेश के पावर प्रोजेक्ट्स का बात करते हैं, बांग्लादेश के पावर प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनीज जैसे अंबानी का, अदानी पावर है, फिर रिलायंस पावर है, सारा का एक्सपोजर बांग्लादेश में है, अच्छा खासा एक्सपोजर है। Even Reliance Power is probably setting up a plant also. Plant means the power plant also over there. That is LNG based plant. जो मेरे दिमाग में आ रहा है L&T, इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का वहाँ पे एक्सपोजर है। मगर कितना परसेंटेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना परसेंट अपने टोटल ऑपरेशन के, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई मेंशन स्पेसिफिकली अबाउट मैरिको एंड वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिसका एक सिग्निफिकेंट ऑपरेशन वहां पे है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल गेट टू अंडरस्टैंड क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वी हैव सीन लाइक व्हेनेवर दिस इंटरिम गवर्नमेंट sworn in, I was listening to an interview of Professor Muhammad Yunus. Although he is a Nobel laureate, but end of the day he maintained that anti-India stance. तो ये किस लिए कि हो सकता है टू कीप those radical Islamists, to keep them happy, to keep the uh, like rest of the like all those aggressive people happy, so that they like they feel it similar minded. तो पता नहीं, वो आगे चल के gradually we will get to know कि how things will pan out. तो ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो जो वीआईपी इंडस्ट्रीज और मैरिको के अलावा बाकी बहुत सारा कंपनीज का एक्सपोजर है, मगर क्या है कि वो परसेंटेज टर्म में बहुत मेजर नहीं है। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग कंसर्न अगर थिंग्स गो, इन केस थिंग्स गो वेरी मच अगेंस्ट इंडिया। और यहाँ पे और एक चीज है, बहुत अगेंस्ट इंडिया का अगर जाता है तो दैट विल बी वेरी वेरी नेगेटिव फॉर बांग्लादेश, नॉट फॉर इंडिया, क्योंकि whatever economic development happened in last 15 years in Bangladesh, that didn't happen earlier. वो 15 साल से पहले बांग्लादेश एकदम थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही था। जो लास्ट 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ओवर देयर, फ्रॉम देयर रेलवे टू पावर प्रोजेक्ट, एवरीवेयर यू विल फाइंड इंडियन मनी। अब अगर दे डू समथिंग लाइक अनफेवरेबल टू इंडिया, तो क्या हो जाएगा, इंडिया का मेजर कुछ इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, मगर बांग्लादेश विल बी इन ट्रबल। एंड आई थिंक लाइक वेल व्हेन some prudent people in the government will take care, will keep this in mind and will maintain balanced stance, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको अपना कंट्री को भी चलाना पड़ेगा, उन लोगों को लेके ही चलाना पड़ेगा who are radical Islamists and very much against इंडिया। और आज भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट सुनने को आया, कहाँ पे, ये इंटरिम गवर्नमेंट का जो लाइक इंटरिम गवर्नमेंट के जो पार्ट है, वैसा क्या बोलेगा इनको, मिनिस्टर बोलेगा, वट एवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। तो I have seen that sort of anti-India sentiment, provocation, or and anti-India statement from a person in the interim government. So things are not going to be as good as it was earlier. ये बात तो 100% है। मगर क्या है कि बहुत इधर उधर करेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम बांग्लादेश को होगा, इंडिया को नहीं होगा। अब बाकी कंपनीज के बारे में बोलता है, जैसे आई वाज रेफरिंग अबाउट पावर प्रोजेक्ट्स, रिलायंस पावर, अदानी पावर का एक्सपोजर है वहां पे, मगर उस पे अगर इधर उधर होगा तो दीज कंपनीज विल नॉट हैव वेरी बिग इम्पैक्ट, क्योंकि उसके टोटल जो ऑपरेशन बोलिए, उसके टोटल रेवेन्यू बोलिए, उसका हार्डली इनसिग्निफिकेंट बांग्लादेश में है। लार्सन टुब्रो का बात किया, वैसा टेक्सटाइल कंपनीज का बात किया, तो ऐसा कुछ कंपनीज स्कैटर्ड हियर एंड देयर जिसका एक इम्पैक्ट है। अच्छा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
जिसका इम्पैक्ट जिस जो बोला कि 8th of this month they have started partially, they have started operation partially in Bangladesh. Things are still not very favorable, so they are keeping a close eye. Accordingly they will take a decision how to operate, and means वो सारा चीज accordingly वो बोलेगा. तो ठीक है, वी आर ऑल्सो कीपिंग अ क्लोज आई. तो इसके अलावा और जस्ट अ मोमेंट, लेट मी फाइंड समथिंग. अच्छा, एलआईसी क्या बोला? द सिचुएशन हैज नॉट रीच्ड नॉर्मलसी एंड मे कंटिन्यू टू हैम्पर ऑपरेशंस गोइंग अहेड. तो डर कहीं पे है दिमाग में, मन में, तो ये एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. तो बाकी अच्छा, Marico, the company said the operating conditions in Bangladesh market are gradually improving and will remain watchful of the evolving situation. Same चीज जो बाकी लोगों से वीआईपी से भी सुनने को मिला. अच्छा, the medium term prospects of Bangladesh business remain intact and we are expecting manufacturing operations to resume soon. तो इससे समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैरिको का बंद था वहाँ. ठीक है. तो ये थोड़ा सा समझ में मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा. अच्छा, आईटीसी का भी थोड़ा बहुत ऑपरेशन वहाँ पे है. भारत हेवी, लार्सन टूब्रो, ये सब कंपनीज भी वहाँ पे ऑपरेट करता है. भारतीय एयरटेल का भी प्रेजेंस है बांग्लादेश में थ्रू इट्स सब्सिडियरी कॉल्ड रॉवी एक्सियाटा. ये रॉवी, it's Ravi Exiata is one of the major telecom operator in Bangladesh as well. अच्छा, तो बस ठीक है, बहुत सारा कंपनीज का बात किया, मगर आई डोंट थिंक देयर इज वेरी बिग कंसर्न फॉर एनीवन. सिर्फ दो कंपनीज पे थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा, दैट इज मैरिको एंड VIP. Based on the developments, if things are attaining normalcy, it's fine. If not, then management will guide us what we should do if we have any investment. So ठीक है, that was from my side in this video. I hope you have enjoyed the video and got some important input for your investment. वैसा videos आगे चल के देखने के लिए please don't forget to subscribe my channel, and thank you so much for your valuable time.